हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में लेट अस सी some drug induced crystals in the urine like sulfonamide crystals and indinavir crystals. सल्फाडाइजिन क्रिस्टलूरिया कब होता है? जब यूरिन का वॉल्यूम कम होता है और ये ड्रग का डोज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ड्रग जो है, ये मेडिसिन जो है, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा एंड ये क्रिस्टल्स विल स्टार्ट अपियरिंग इन द यूरिन। सो जब भी बहुत हाई डोजेस ऑफ हमने आइदर ओरल ड्रग दे दिया है या इंट्रावेनस ये सल्फा मिथैक्सोजोल सल्फाडाइजिन दे दिया है पेशेंट को, दैट टाइम इट गेट्स वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड एंड गेट्स एक्सक्रीटेड इन द यूरिन व्हेन द यूरिन वॉल्यूम इज वेरी लेस। ये जो सल्फा क्रिस्टल्स है, दे लुक लाइक शॉक्स ऑफ व्हीट एंड इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन करें, ठीक उसको वी गिव देम इनफ ऑफ फ्लूइड्स, इनफ ऑफ वाटर एक्सेट्रा, देन वी कैन मेंटेन द हाइड्रेशन एंड इफ यू मेंटेन द अल्कलाइजेशन ऑफ द यूरिन, हम यूरिन को अल्कलाइन करेंगे तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा rather than forming these crystals in the urine. सो ये है सल्फोनामाइड क्रिस्टल्स, समथिंग लाइक अ फैन, एंड ये है द स्टॉक्स ऑफ व्हीट। जैसे हम फील्ड्स में देखते हैं, अगर ऐसे ही दिखते हैं ये क्रिस्टल्स यूरिन में, जैसे कि ये स्टैक में बना हुआ है, फाइन क्रिस्टल्स है नीडल की तरह, एंड ऐसे स्टैक्स में ही रहते हैं ये। एंड दी सल्फा क्रिस्टल्स क्या हो जाता है, वेन एवर दिस मेडिसिन जब हम लेते हैं जिसमें सल्फोनामाइड्स एक्सेट्रा है, तो ये कभी कभी व्हेन दे फॉर्म द क्रिस्टल्स दे कैन कॉज क्रिस्टल नेफ्रोपैथी। सो ये किडनी को डैमेज कर सकता है एंड बहुत कम है कि सल्फोनामाइड्स स्टोन्स, किडनी स्टोन्स को फॉर्म करे, बट समटाइम्स वो क्या करता है, इंट्राट्यूबुलर क्रिस्टलाइजेशन कर देता है ये मेडिसिन का, एंड देयर it will start developing the stones. Most commonly we have seen that these stones are developing in the bladder. A bladder एक most common location है to form such stones, and after 1 to 4 weeks ये medicines देने के बाद ये types of crystals develop होने शुरू हो जाते हैं. So these sulfonamide crystals they are abnormal in the urine. अगर ये दिखते हैं तो abnormal है, ये needles type रहेंगे, sheaves of small bundles के तरह हम इसको देखेंगे, and ये often ये brownish color के रहते हैं, and जब भी ये crystals आपको दिखता है तो आपको patient का drug history पूछना पड़ेगा, and जब अगर drug देने के बाद ये आया है तो it is not a very pathological condition. It may be the excretion of the drug and maybe the patient is less hydrated and more of an acidic urine. But when you should also remember that this presence is also associated sometimes in cases of kidney stone formation. The crystallization in the renal tubules can sometimes give rise to such crystals. Urinary sulfa crystals, they are usually seen in patients undergoing treatment with sulfonamide group of drugs. They vary in shape, and whenever you see in an acidic urine an unfamiliar crystal, आपको कोई crystal दिखता है, यूरिन का pH acidic है and you are not able to actually make out, then you should always think of a sulfa crystal and you should ask the drug history. And urine can be tested chemically for sulfonamide compounds, and also the patient's history can be verified whether he is on sulfa drugs. So this is again a sulfonamide crystals in the urine, and this you can see again broom shaped crystals in the urine. The next drug which we will see is indinavir crystals. So this indinavir is one of the medicines which we use to treat the HIV patient. It's an antiretroviral medicine. It is a protease inhibitor and it decreases the HIV load in the blood. So under the microscopy, you will see that these indinavir crystals, they are colorless, they are polarizable, they are flat needles pointed at both the extremities, and rarely हम उनको single में देखते हैं. Usually हम ये they are in groups only, and ये needles जो है बहुत ही fragile रहते हैं. You can see here they are very easily broken, and you can see the fragments which are broken down.
एंड whenever इंडिनावीर जब भी यूरिन में soluble नहीं रहेगा, whenever it is poorly soluble in that pH, then it gets crystallized and then it gets excreted in the urine. So patients sometimes develop urinary stones also, and usually it is a mixture of indinavir and calcium oxalate, etc. They come together and they can form kidney stones also. So these are the indinavir crystals you can see. Usually 20% of the oral indinavir जो है वो excrete हो जाता है within 8 hours as half as intact indinavir, and बाकी के indinavir के metabolite के form में excrete हो जाता है. So these are the crystals which you see, very fragile, needle shaped, usually in clusters, and these are scattered here singly. So this is again Indina Veer crystals. You can see this star burst appearance of these crystals. So here also you can see that this is a unstained preparation of urinary sediment, and three different forms of indinavir crystals are seen. One is these rectangular plates of various sizes, needle shaped है ये crystals, and these plates have an irregular border. Occasionally ये थोड़े tapering भी रहते हैं, and some small triangular forms also, which are fragile forms, broken ends are also seen. Here also you can see a sheaf of densely packed indinavir needles, and here they have come together and arranged like a rosette. So these are few of the drugs which can be excreted in the urine, and you might see the crystals of these drugs in the urine. So whenever you are seeing such crystals, always ask the history of the patient if he's on any kind of a medication, because this is one of the causes for seeing crystals in the urine, that is drug administration. Maybe sulfonamide, maybe indinavir, sometimes amoxicillin. All such drugs can cause crystals in the urine. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.